host and organizer, Ambassador Hussain Haqqani, Dina Sarwar, Rasa Rahman, Marvi Sarmad. I would be remiss if I just keep going with the names. Every one of you who has helped us make this a fairly successful event. I would like to request Ambassador Haqqani to take a seat at the podium, and Rashid Saab to come and actually wrap this session up with his closing remarks. And after that, we read reaffirmation resolution of what we discussed, what we intend to do. And by default, the participants who signed a list that was circulated, their names are on the declaration. If you want a name to be removed for whatever reason, please do let us know, and we'll be happy to take it off the list. So, Raj Saab, please, mic is yours, and I have a copy of the resolution here as well. Thank you so much. मैं समझता हूँ कि तकी साहब ने जो मेरे साथ ज़्यादती कल की अंग्रेज़ी में बात करके, और मैं इनके नक्शे कदम पर चल पड़ा, तो शायद आपको ये गलतफहमी हो गई हो कि मैं सिर्फ अंग्रेज़ी में तकरीर कर सकता हूँ। चुनांचे मैंने सोचा कि क्यों ना उर्दू का सहारा लिया जाए। मैं पहले तो साथ फोरम सब साथियों, ऑर्गेनाइजर्स, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज हमने यहाँ किया क्या है, ज़रा सा हटके और ठंडे दिमाग से सोचें। हमने यहाँ एक मिनी पाकिस्तान इकट्ठा कर दिया, और ये मिनी पाकिस्तान वो मिनी पाकिस्तान है जो वाकई पाकिस्तान के हक में और उसके मुस्तक़बिल के लिए ख़यालात के लिहाज से और अपनी जद्दोजहद के लिहाज से, अपने फ़िक्र के लिहाज से वाकई खैर ख़ां है पाकिस्तान का। तो ये कोई थोड़ी बात नहीं है। अब जब भाई बहन इकट्ठे बैठते हैं किसी भी फैमिली में, तो फ़र्क भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, इख्तलाफ भी होता है। तो फिर क्या करती हैं फैमिलीज़? इकट्ठी बैठ जाती हैं ना, रेकन्साइल करने की कोशिश करती हैं, गुफ्तगू करती हैं। तो आज हमने यही तो किया, और हमें ये एहसास हुआ कि बाज़ वक्त किसी को गुस्सा आ गया, कोई ऊंचा बोल गया, कोई ऐसी बात कह गया जो दूसरे को नागवार गुजरी। तो क्या हुआ? हम कोई एक दूसरे के गिरबान को तो नहीं पकड़ा, हमने बात की। और यही हमारी कामयाबी है कि हमने यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हम एक सिविलाइज तरीके से डायलॉग कर सकते हैं, इख्तलाफात के बावजूद और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के बाद। ये पाकिस्तान है जो हम बनाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान नहीं जो आगे सुसाइड बॉम्बर हमें उड़ा देता है, या हमें गोली मार देता है, या हमें बंद कर देता है, या डिसअपीयर कर देता है। वो पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें। वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें हम आज़ादी से अपना इज़हार ख्याल कर सकें, एक दूसरे से जैसे यहाँ किया, मिल बैठ कर इख्तलाफात जो हैं, फ़र्क जो हैं, उनको मिटा सकें, रेकन्साइल कर सकें, कंसेंसस बना सकें, एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बना सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कहने के बाद मैं ज़रूरी समझता हूँ, वक्त में बहुत ले रहा हूँ सारी, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है बातें करनी। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी स्टेट के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी स्टेट की कुछ खसूसियात हैं, और एक उसकी खसूसी जो एक पहलू है वो ये है कि नापसंदीदा लोग, जिसमें क्रिटिक्स, डिसिडेंट्स, वो जो कि स्टेटस को कुछ चैलेंज करते हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग के लोग हैं, चाहे वो नेशनलिस्ट प्योर हैं, चाहे वो कोई भी है, कहीं जब ज़रूरत होती है तो सपोर्ट भी कर देते हैं, खड़ा भी कर देते हैं, बना भी देते हैं, और फिर जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है या कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है तो फिर मारते भी हैं। अब ये मारने का जो अमल है, ये बदतरीज बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा।
کیوں بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے اور کیجیے. بلوچستان میں انسرجنسی اس دفعہ 2002 میں شروع ہوئی اور ڈس اپیئرنسز کی خبر آہستہ آہستہ آنی شروع ہو گئی. اب تو اٹس اے اسکینڈل، 1000 لوگ آئے. وہ کمیشن جو بنا انفورس ڈس اپیئرنسز پہ، وہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اب ڈس اپیئر کر گئے وہاں سے، وہ نیب میں چلے گئے، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اور جو انہوں نے کارروائی وہاں کی وہ از بی ایس، if you pardon the French. رپورٹ آئے گی، آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں شائع کریں گے. وہ فنومینن نیشنلسٹ انسرجنسی کے حوالے سے شروع ہوا، خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کے حوالے سے آ گیا، سندھ میں نیشنلزم کے حوالے سے شروع ہو گیا، صدر پنجاب میں سرائکی علاقے میں شروع ہو گیا. کیا تخت لاہور بچ جائے گا؟ غلط فہمی آپ کی. کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں یہ بتدریج پھیل رہا ہے؟ یہ اس لیے پھیل رہا ہے، یہ اسٹیٹ کرائسس میں ہے. کیوں کرائسس میں؟ ایکسٹرنلی ہماری پراکسی وارز ہی نہیں ختم ہوتی ہیں. ذکر ہو رہا تھا اس کا. میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے افغانستان اور انڈیا میں پراکسی وار چل رہی تھی. انڈیا میں کشمیر کے حوالے سے، افغانستان میں سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں. اب کیا ہونے لگا؟ ایران میں پراکسی وار شروع ہو گئی ہے. وہ کیا ہے؟ شیعہ رجیم ہے ملاؤں کی. جتنی مائنورٹیز سنی ہیں ایران میں ان کو بھڑکایا جا رہا ہے سعودی عربیہ اور یو ایس سپورٹ کے ساتھ. بلوچ ہیں، عرب ہیں، ترکمین ہیں، کرد ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ ان کے حق نہیں ہیں یا حقوق نہیں ہیں. ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ایران میں، ماضی میں بھی ہوئی ہیں، شاید اب بھی ہو رہی ہیں. لیکن ہم اس کا جب حصہ بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پنگا بازی بھی ختم نہیں ہوئی. اس کے اثرات آج نہیں تو کل واپس ہم پر آئیں گے، آ رہے ہیں. اس کا جو ایک الیجٹمیٹ چائلڈ ہے وہ انٹرنل ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، اور یہ ساری انٹالرنس جس کی یہاں اتنی بات ہوئی ہے. اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہر ایک کے حقوق سلب کرے گا. میرے سے آپ لکھ کے لے لیں. آج اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، نیشنلٹیز کے حقوق جو ہیں سلب ہو رہے ہیں، ریلیجس مائنورٹیز کے حقوق جو ہیں سلب ہو رہے ہیں. یہاں ہندوؤں کی بات ہوئی، ہندوؤں کی بات کریں، سکھوں کی بات کریں، سب ریلیجس مائنورٹیز کی بات کریں، آپ سمجھا گی. کوئی بندہ بشر نہیں ہے جو اپنے حقوق کی آواز اٹھائے جو اس مملکت خداداد پاکستان میں اسٹیٹ کا وکٹم آج نہیں تو کل نہیں بنے گا. یہ لکھ کے دیں. تو یہ کرائسس جو ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کتنا فریجائل اور پریکیریس یہ اسٹیٹ ہے. اور یہ جو پاورفل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پاور میں ہیں، سامنے ہیں یا پردے کے پیچھے ہیں، پاور میں ہیں، یہ ان کا کرائسس ہے. کیونکہ ان کی گرپ آن پاور جو ہے بتدریج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے. لوگ اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے، آج نہیں کریں گے کل کریں گے. اگر ایک حصہ آج کرے گا دوسرا کل کرے گا، تیسرا پرسوں کرے گا. پاکستان کے عوام پاکستان کو ان سے واپس لیں گے انشاءاللہ. تو اس کرائسس کے حوالے سے میں آپ سب سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ڈفرنسز ہیں، کس سوسائٹی میں نہیں ہیں، کانفلکٹس ہیں، کس سوسائٹی میں نہیں ہے. ہینڈل کیسے کرنا ہے، سوال یہ ہے. تھوڑا سا ایک بہت ہی چھوٹا سا ہم نے یہاں ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا کیسے ہینڈل کرنا ہے. گفتگو کرنی ہے، برداشت کرنا ہے، سیکھنا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، عقل سے کام لینا ہے. بری بات نہیں. اب میرا خیال ہے میں نے بہت بول لیا. یہ ڈیکلریشن ہم نے ڈرافٹ کی ہے. اس میں ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ جو آج جتنی گفتگو ہوئی، کل تھوڑی سی ہوئی، آج ہوئی، اس کا عکس اس میں آئے، ریفلیکشن آئے. کوشش کے باوجود اگر پڑھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات رہ گئی ہے یا پراپرلی ایمفسائز نہیں ہوئی ہے یا اس کو وہ وزن نہیں دیا گیا جو دینا چاہیے تھا، تو بسم اللہ بتائیے ہمیں. وی آر اوپن. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم کوئی چیز آپ پر امپوز نہیں کرنا چاہتے، اور اسی لیے ہم نے جب ہم ڈس ایگری بھی کرتے ہیں کسی سے، تحمل سیکھا ہے کہ ان کو بات تو کرنے دو بھائی. جب وہ بات کریں گے تو انہیں انگیج کریں گے نا.
अगर उनको बात ही नहीं करने देंगे, हम कह दें जी हमें पता है क्या करना है भाई, ये है, तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना, ओनरशिप नहीं होगी। हम चाहते हैं आप ओन करें इस फोरम को, इस डेक्लेरेशन को और इसके प्रोग्राम को, और आगे इम्प्लीमेंटेशन में हमारा हाथ बटाएं। अब मैं ये पढ़ लेता हूँ। Reaffirmation of a liberal, democratic, secular, progressive Pakistan. माजरत की अंग्रेजी में। London, October 14th, 2017. Several prominent liberal, progressive, and nationalist intellectuals, human rights and social media activists, and public figures from Pakistan gathered in London for a conference on Pakistan, the Way Forward, organized under the banner of South Asians Against Terrorism and for Human Rights, SAATH, co-hosted by US-based columnist Dr. Muhammad Taqi and former Pakistan ambassador to the United States, Hussain Haqqani. The gathering had to be arranged, like last year, away from Pakistan because of the threats to the security of free thinkers in the country. Participants, जिसकी list attached हो जाएगी, expressed grave concern on Pakistan's continuing crisis-ridden trajectory, of which the increasing threat of global isolation as a consequence of the continuation and expansion of proxy wars in our neighborhood holds center stage. There are other equally important areas of worry. The widening circle of repression of critical, dissenting voices to the state's narrative have led to shrinking space for liberal, secular, progressive ideas and pluralism. There are constant threats to democracy and to nationalists in Balochistan, Sindh and Khyber Pakhtunkhwa. NGOs, human rights defenders and individuals are being victimized. Major political parties are demonstrating an inability to prioritize protection of human rights and social justice. Attempts to mainstream extremist and terrorist organizations is a particularly dangerous development and a threat to the democratic polity. Thank you. State support for and tolerance of groups considered terrorist by the rest of the world remains a serious concern. Unelected institutions of state challenging the democratic mandate of the elected government in keeping with a persistent pattern continues to be a serious source of apprehension. To establish a true democracy in Pakistan, which is a multinational state, the federating units must be given not only maximum political autonomy, but also control over their natural resources. सुन रहे हो? कौन देख रहे हो? तुम्हारा मामला है. The National Finance Commission award should be revisited, giving more weightage to underdevelopment of the provinces and their contribution to the national exchequer. This forum recognizes that one of the reasons Pakistan's democracy has remained tenuous is that while the center has denied rights to the provinces have failed in the devolution of power to the local governments. Therefore, this forum demands that the provinces should activate the provincial finance commissions and allocate maximum resources to the local governments. It also demands that the local governments should be given 25% of the royalty and the profits of natural resources exploited from their respective areas. ठीक है? Participants decided
that Pakistan needs a new national narrative that is based on the consent of its people rather than on religious hatred, militarism, and militancy. Participants of SAATH will set up two secretariats, one in Pakistan and the other abroad for the diaspora, to help wrestle the idea and identity of Pakistan away from the obscurantist forces. Participants further agreed that Pakistan faces the risk of global isolation because of its continuing proxy wars in its neighborhood, widespread obscurantism, growing intolerance, lack of rule of law, along with official support for extremism and general disregard for human rights. Pakistan ranks 147 out of 188 countries in the UN's Human Development Index and 143 out of 144 in the World Economic Forum's Gender Gap Report. It is the world's sixth largest country by population, with the world's sixth largest military. But its economy is 26th in the world, 26th in the world by size of GDP on PPP basis, power parity, and 42nd in nominal terms. Pakistan lags behind most of its neighbors on the Human Development Index and the Human Capital Index. It is sad and disconcerting that instead of dealing with these issues with the help of fresh ideas espoused by broad-minded Pakistanis, the Pakistani state continues to appease or nurture religious extremists, propagate or allow the propagation of religious extremism, and allow it free spread in society, and persistently misinform the people of Pakistan about the realities of our country. Instead of facing these harsh realities, the Pakistani people are fed a steady diet of conspiracy theories and exaggerated threats to national security from other nations and countries. The Pakistani state regrettably expresses a continued willingness to engage with religious extremists and terrorists, and sometimes even talks of formally inducting jihadi terrorist groups into the state's paramilitary structure, and lately mainstreaming extremist and terrorist organizations, but remains hostile to liberal, progressive and nationalist groupings within Pakistan. Political parties representing the Baloch, Muhajir, Sindhi and Pashtun segments of Pakistan's population have been targeted by both state repression and hostile propaganda aimed at delegitimizing them even when they have won clear electoral mandates from the people. The state also pursues repressive policies towards the population-wise smaller provinces and nationalities and their elected representatives. It is time for Pakistan's rich and powerful ruling elite to own up and take responsibility for the failed policies of the past, instead of promoting conspiracy theories through manipulation of the mainstream mass media and increasing repression of the social media. Participants of today's conference are a diverse array of people, united by the desire for a pluralist and tolerant, liberal, secular and progressive Pakistan that abides by internationally recognized human rights, allows full and free debate, treats all its people and nationalities fairly, and is no longer seen around the world as an incubator for terrorism. Only a pluralist Pakistan, at peace with itself and its neighbors, fully respectful of human rights of all, including religious minorities, would be able to gain international respect, have a positive global and local image, and avoid further descent into chaos. We resolve to stand with and assist each other to protect a pluralist
liberal, secular and progressive vision of Pakistan, and to let the world know that such a vision exists and offers hope for Pakistan's future. We resolve to protect the legal rights of all non-extremist groups and political parties, notwithstanding our disagreements over details and minutiae of policies or personality differences with individuals and leaders. Questioning state policies is a legitimate right of all Pakistanis. We stand together to oppose the tendency to label dissident voices as traitors or kafirs in an effort to shut down debate and discussion of alternative policies. Dissent is patriotic. Thank you. Thank you, Rasa, for a spirited delivery of a pretty comprehensive resolution. Do we need any discussion? I hope any dissent? Yeah, dissent. We're not manufacturing consent. Fahim. Sorry. Fahim. Thank you. एक पॉइंट जो खास तौर पे कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से तो मेरी रिक्वेस्ट ये कि दे हैव राइट टू फेयर ट्रायल और उसको इस रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए जो भी सिंधी बलोच या जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं साफ़ी हैं जितने मिसिंग पर्सनस हैं उनका राइट है to access legal services or that should be mentioned for this forum. Thank you very much. Second that. Sorry, आवाज़ यहाँ पे पीछे नहीं आ रही थी तो फिर repeat it for the people who. Immediate production of. Sure. Basically, the right to due process for the missing persons, and that is inclusive of the Baloch missing person and everyone else in Pakistan, of course. All right, I'll just go around the two. So that is noted. Yes. All right. Sir. Well, thank you. Very well drafted resolution. I second it. But I would request you to add, where you said that threats to other nationals within Pakistan, that threat to their lives. Is it possible for you to add people of AJK and also Gilgit-Baltistan? Because we are also targeted. A number of over people are kidnapped, some are being killed as well. That's one thing. Secondly, when you talk about allocation of resources, can you also please include AJK and also Gilgit-Baltistan? Because we also like, on one end, Pakistan, exploit our resources. But when it comes to giving back to us, they don't. So can you please add that as well? Comment from the. We are taking in the points. Suggestions. Yes, yeah. Unless there is something. Provinces and regions कर लें इसको. First, let's get the feedback. No, missing persons is absolutely, there's a blanket statement. Of course. Yes, that is not going to be specific. That is not region specific. ठीक हो गया जी. All right. से points ले लें. जी, Dr. साहब in the back. I will really appreciate and I commend you for a very well articulated and very well drafted resolution. I second you. Only one thing addition when you say 24% resources of the Balochistan or whatever should be spent on there. Please, if you can, without creating any problem, if you can add 20%, 25% of the revenue generated by any city, regardless of the name. I won't mention name, people will get upset. 25% of the revenue generated by any city should be spent on that. If you can, please. We have verbiage to the effect that we are talking about the local government's devolution of down to the city level essentially. Just a clarification I want to make. Yes. Sir, if you get the draft of the resolution and read it again, the 25% figure you are quoting is about royalty, right? Royalty on natural resources taken out from whichever province. Your comment about, plowing back a certain amount of money into a particular region, city, or whatever the case may be, I think we have to, if at all, take it, couch it in more general terms.
because there will be differences between regions, provinces, cities, and so on and so forth. One size may not fit all. The point has been made. Okay. General terms में बात हो. I agree with you. Barrister sir, real quick. It was very well articulated resolution. I have just one, if a place, it can find a place, because it's a very serious matter, very, very serious matter. It's just like in Bengal, this Al-Badr thing, this is very serious. And He's specifically talking about the Al-Badr organization operating out of Upper Dir area who has been crossing into Afghanistan. I think we have verbiage to the effect of militancy. तभी साहब मेरा मुस्लिसाना मशवरा ये है कि आप लोगों को की बातें सब सुन लें और फिर आप और हम सब इकट्ठा उनमें से कुछ पॉइंट्स को और कुछ चीज़ों को समझते हैं कि let's not otherwise back and forth में बहुत वक्त चला जाएगा. We got that. That's fair enough. Mohsen. I think we can add like something specific about FATA, especially the destruction which has been made there in various military operations, the compensation for that, and also at least if we can add something is the merger of FATA with Khyber Pakhtunkhwa, or if it's not specifically the merger, at least use the word mainstreaming. Sorry, fair. We can accommodate that really quick. Okay. और भी ले लें सारे comment. Yes, I'm taking that. Professor Amin Mughal साहब को Rubina is in the line. Just thank you, congratulations, it's excellent, thanks very much. Just a little request to... Oh, sorry. Can Ji, Rubina, go ahead. Yeah, just quickly, can I request, could we include around something on forced conversion of Sindhi Hindu girls? Because this is really a political issue. It drives the exodus of indigenous Sindhis out from Sindh. So I would like to support that. Sure. Professor Amin Mughal. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मैंने गलत पूरा सुना ना हो ये कि supremacy of the people, that is supremacy of the parliament or all other institutions of state, ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त का सबसे बड़ा मरकज़ी मसला है. Yes. Accountability of the generals. Let us do it seriously and effectively. Let's keep moving. Taimur. Ji, I think the persecution of labor activists should also be included as a separate point, especially trade union activists and Anjuman Muzareen and so on. Yes. Their persecution has been pretty terrible. Certainly. Yes, sir. Right back. शहजाद इरफान, सराय के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ, यहाँ मजलूम कौमियतों और महकूम तबकात की बात हुई है, इसमें सराय के हवाले से पंजाब की बालादस्ती पे भी यहाँ बात हुई है. हम सरायकी लोग अपनी एक तहरीक की सूरत में मुस्तकिल जद्दोजहद है हमारी सरायकी सूबे के हवाले से, उसमें हमारे यहाँ भी अब एक तशद्दुद की लहर और तालिबानाइजेशन का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रिडन था और उसके हवाले से जो एक बैक आया है वो तालिबानाइजेशन के हवाले से है. तो मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पंजाब की तकसीम, सरायकी सूबे का क़याम और सरायकी लोगों की जद्दोजहद के हवाले से इसको भी इस एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए. शुक्रिया. You go right ahead, please. मैं ये कह रहा था कि मैंने पहले भी सजेशन दी कि लोकल जो हमारा कल्चर है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, वो इस दुनिया में फंडामेंटलिज्म को डिफीट करने के लिए बहुत पावरफुल हथियार है. तो उसको फ़रोग़ देने के लिए हमें यानी जो लोकल कल्चर है उसको हम फ़रोग़ लोकल लैंग्वेज से दे सकते हैं. और जो हिस्टोरिक नेशंस हैं जैसे पंजाबी है, सिंधी है, बलोच है, सराइकी है, पश्तून है, तो इनको नेशनल लैंग्वेज करार दिया जाए और नेशनल लैंग्वेज का एक हिस्सा करार दिया जाए, उनको Fair enough. All right. So with this, I'm going to ask Ambassador Haqqani to please take the mic and. Thank you very much. Thank you all for, first of all, making the effort. Some of you have traveled great distances in our effort to economize, because
we will soon hear all the propaganda. So all the money that we were able to collect from Mossad, German intelligence, Indonesian intelligence, Indian RAW, CIA, MI6, Swedish intelligence, etc., etc., was not enough for us to fly you all first class. In fact, some of you had to fly through 2 or 3 cities because of our pursuit of cheap tickets. We didn't give you very good accommodation, just functional accommodation, but you all came, and you came primarily because of your convictions. And it is based on that conviction that I have the conviction that this effort will bear fruit. I've been talking to everybody individually as well, because I've seen that as my responsibility. There are some who feel that we didn't discuss the way forward as much as we should have. We discussed our complaints more. And then there are those who feel, oh God, sometimes some people bring us into the smaller alleys rather than staying on the highway. Now, I have spent a lifetime actually in political work. I may have changed my perspective and my views may have evolved over time, and political work is about bringing people together and taking your message to people. And it always involves sometimes getting people together with slightly variant priorities. Since it's my custom to try and make things light at the end of the day rather than tough, I will just say that all the proposals that have been made will be incorporated into the final draft. But there's a slight story here. As a young boy, I was active or interested in the 1970 election. I was 13 or 14 years old at that time. And since I lived in Karachi, and Karachi was a stronghold of Jamaat Islami at that time, so I was involved in their politics in my mohalla, and that's how I ended up in student politics. So there was a big jalsa of Maulana Maududi Marhum in Multan. And we were all, young boys were all taken there by train, so we attended that jalsa. And I had this memory from age 13 or 14. And Maulana Maududi was being greeted there as this great savior of Pakistan who will bring an Islamic constitution. So there were all these speeches about Islamic constitutions. Then the Anjuman-e-Tajiran Multan, their president was asked to give a speech. And the president of Anjuman-e-Tajiran Multan started his speech by saying, Maulana Maududi Muhtaram, aapne Islami dastur ke liye bahut kaam kiya hai, hum uski bahut izzat karte hain. और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लामी दस्तूर, हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान सब गद्दारों से पाक किया जाए और मशरक़ी पाकिस्तान में जो लोग अलग की बातें कर रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए. हम चाहते हैं कि ये द बिग इशू था. फिर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ही से, और ये जो मुल्तान रोड जो लाहौर की तरफ जाने वाला है, इस पर जो चुंगी नाका है, इसका खात्मा भी बहुत ज़रूरी है मौलाना साहब. तो all the audience got a little surprised कि भाई ये कहाँ इस्लामी दस्तूर से बात होती चुंगी नाके तक बात आ गई. तो सियासत में ये होता है कि कुछ बातें एक आदमी को लगती है, लेकिन उस आदमी के लिए वो चुंगी नाके की बात अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी. तो मेरी गुजारिश ये है कि जब कोई साथी ये बात करता है कि ये तफसील भी हो, वो तफसील भी हो, बात बातें हैं, वो रहमान साहब, राशिद रहमान साहब हमारे एडिटर भी रहे हैं, उस्ताद भी हैं, उनका भी बड़ा तजुर्बा है. तहरीर करते हुए बात पॉइंट्स हैं जो कवर हुए हैं. बस लोकल गवर्नमेंट का पॉइंट है तो उससे यकीनन कराची और जो कराची में रहने वाले हैं और महाजिर हैं उनका प्रॉब्लम हल होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट हो जाएगी. इसी तरीके के साथ हमारे जो पहले बास भाइयों को ये था कि भाई आप पाकिस्तान में कौमियतों की तादाद बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा रहे कि हर एक कौमियत हो गई तो फिर हमारी जो तारीखी सरजमीनें हैं उनका क्या बनेगा, वो भी हमने अकोमोडेट किया है. लिंग्विस्टिक तरीके के साथ बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं. लेकिन जो बात प्रोफेसर अमीन मुगल ने फरमाई है कि असल में अवाम की बालादस्ती और आइनी इदारों की बालादस्ती, और फिर आइनी इदारों में ये भी, इसमें हम उसकी लैंग्वेज को रिफाइन कर लेंगे जैसे पिछली बार किया था, बहुत सी तजावीज़ यहाँ से लेके. It is important to say कि people supremacy through elected institutions, but then the elected institutions and the political parties that control them also need to change their behavior to represent the people rather than to acquire office in the name of people and then act against the people, which has been Pakistan's tragic history. Now we have not today
we had a declaration last year. And the result of that declaration is that we got together with larger numbers. We are almost twice the size of the group that assembled last year. A few people dropped out, they chose not to come, and a lot more have joined in. We are a bigger group today. And we have made a very specific decision. And I want actually all of you to specially vote on that decision by applause to show that you will actually participate in that. The real decision is not the philosophical, because the philosophical we will continue to refine, because after all we are a joint front of many, many groups and many, many individuals. The decision is that we will actually give it concrete shape, that we will actually have a secretariat in Pakistan and abroad that will actually become a clearinghouse for all the various groups. Now some of us have strengths, some of us bring strengths. Some of us have the ability to be able to reach Western governments and have our opinion heard. Sometimes that access is exaggerated, and sometimes, sometimes the Foreign Minister of Pakistan ends up giving credit to one of us more than he or any other individual deserves. But that access is a value which can be useful, for example, even in the case of people who are involved in enforced disappearances. There are people in this audience who know what some of us have done to help people who have just reappeared after being disappeared and feel uncomfortable living in Pakistan and want to move abroad, and how some of us have helped them. Once we have secretariats, we will be able to do that in a more organized manner. Because rather than these people being stuck, anybody who has been disappeared once, if he reappears, the prospect that he or she will disappear again is quite high. So therefore it is important for such people to be saved and protected and be enabled to work from somewhere else. And that effort is already taking place. And I'm grateful to God that, or the powers that be, that we have the ability to be able to help some of them. But we need to do in a more methodical manner. So we are going today in a much more, a much better situation than we had come here the last year. Many of us now know each other. There will be a lot more email traffic than before. But I have a minor complaint. And that minor complaint is that some brothers and some friends and some colleagues and some comrades and some sisters and some associates, the enthusiasm that they manifest when they are present wanes when that enthusiasm requires them to answer emails. Now when the network is of a global nature, then people have to be efficient and responsive. And similarly, we had talked, and we now have an efficient website. SAATH Forum, SAATHforum.org is a website in itself. All of you who want to post things on it, we will figure out how you can do it automatically. We will create nodal points, about 10, 12 people. No need to have 100 people putting up, will be chaos. I am sure you will agree. But every key place we can have like 10 people, nodal points doing that. We are also trying to acquire something that is already existent, that is new-pakistan.com, which is a website that some young Pakistanis have been running. And they have run out of steam. One of them was physically impaired, and he has now reached a position in his health that he cannot keep running it. But maybe we need to keep going it because it's a good name. It's not New Pakistan as some cricketer in Pakistan envisages. It is New-Pakistan. And the dash is very important because there is a gap between New and Pakistan. That gap has to be realized. And so that gap exists. We will continue to do that. And we, I promise you, will meet again next year here in London. But I will do my best, this is my promise to you, to also arrange a get-together in between now and next year's gathering here in Pakistan for those who are in Pakistan, so that they can actually have a better feel of being able to work together. And now neither I, nor Rashid Saab, nor Beena Sarwar, nor Muhammad Taqi Saab can give you any guarantees that when something happens of that nature in Pakistan, the
end of it will be as pleasant as this evening is going to be. Oh, We are used to it. Because in London, we can tell you that this evening will end with a reception and there will be dinner after. And hopefully tonight the dessert will not finish early, like last night. But we do not know what will happen there. But we will still make that effort. And the reason is very simple. The reason is that we have a struggle of our lifetime ahead of us. We all have views. We all have different views. But one thing we can all agree on, that what exists is just not tenable. That the system that exists in Pakistan is not a system that we want to persist forever and ever. That the state structure is a state structure that is inherently oppressive and it is disruptive for peace in the region. वो गालिब का शेर है कि गर्मी सही कलाम में लेकिन ना इस कदर कि जिससे बात उसने शिकायत जरूर की. The state of Pakistan is, मतलब चीन है बस हमारा दोस्त, वरना पड़ोस का हर मुल्क नाराज है हमसे, हर एक को हमसे शिकायत. मुल्क में रहने वाली कौमियतों में तकरीबन हर एक ही को शिकायत है. आज हमारे दोस्त एक खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम पंजाबी हैं, हमें भी तो शिकायतें हैं. बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं. और ये शिकायतें इस वजह से हैं कि रियासत का ढांचा ऐसा बना दिया गया है कि उस ढांचे के अंदर किसी की शिकायत के मदावे की गुंजाइश ही नहीं. अभी भी फोन आते हैं, अमेरिका में भी फोन आते हैं. पिछले साल की कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने आपको बताया कि हमें फोन आ रहे थे कि कॉन्फ्रेंस में ना जाएं, आप ना अपनी कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आपके साथ सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे. दुरुस्त मामला क्या होते हैं? आप में से सबको होता है. हमारी रियासत की अप्रोच ये होती है कि अच्छा जी आपको क्या चाहिए, प्लॉट ले लें, मनसब ले लें, पैसा ले लें, मगर आइडियाज की कदर कोई नहीं करता. किसी आदमी की राय भी हो सकती है. मुझसे पूछते हैं कि आपकी इतनी राय बदल गई. मैंने कहा राय होती है तो बदलती है ना यार. तुम्हारी तरह थोड़ी है कि नौकरी है सारी उम्र के लिए, सेकंड ऑफ 10 भर्ती हो तो 4 तक तुम्हें कुछ बदलना ही नहीं है, सिर्फ सितारे बदलने हैं शोल्डर के ऊपर. हम लोग जिनकी राय होती है उनकी राय होती है, जिनकी राय होती है उनकी राय बदल भी सकती है. राय को समझना, राय की अहमियत को समझना, तज्जिये की अहमियत को समझना, ये हम सबका एक मुश्तरका एजेंडा है. मैं आप सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ. जो आप लोगों ने तजावीज़ दी हैं इनको फाइनल डिक्लेरेशन में एडिटिंग करते हुए आज शाम तक इनको शामिल कर लिया जाएगा. लेकिन मैं आपसे एक बाय अप्लॉज, तालियों से जो डिक्लेरेशन है उसकी मंजूरी चाहता हूँ कि आप मुश्किलात तमाम तर होने के बावजूद हमने जहां अपनी जिंदगी में, कुछ लोग हैं उनकी उम्रें बाज़ लोगों से ज़्यादा हैं, और उन नौजवानों को मैं ये कहूँगा कि हम में से जिन्होंने कुछ अच्छे दिन देखे, कुछ बुरे दिन देखे, और बाज़ हैं जिन्होंने सिर्फ बुरे दिन देखे. हमारी तहरीकों, हमारे यहाँ वो भी हैं जिन्होंने सिर्फ बुरे दिन देखे हैं, बाज़ हैं जिन्होंने अच्छे भी दिन देख लिए खुशकिस्मती से, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन याद नहीं रहते. बुरे दिनों की यादें रात को नींद में ज़्यादा मुखिल होती हैं बनिस्बत उसके जब आपको कभी उल्टा लटकाया गया होता है, पीटा गया होता है, मारा गया होता है. वो आपको ज़्यादा याद रहता है बनिस्बत उसके कि कभी आपको कोई मनसब ओहदा दे दिया गया हो और वहाँ आपको सलामी भी दे दी गई हो. वो लेकिन अच्छे बुरे दिन सारे के सारे गुजारे हैं. लेकिन अगर आपके दिलों में अभी तक ये ख्वाहिश बाकी है कि तब्दीली के लिए काम करें और अच्छी तब्दीली के लिए काम करें, क्योंकि अब तब्दीली का लफ्ज़ भी हाईजैक हो गया. लोग स्टेटस को तब्दीली कहते हैं, तो वो स्टेटस को तब्दीली, स्टेटस को वाली तब्दीली नहीं, बुनियादी तब्दीली, जिसमें ये बात समझी जाए कि 21वीं सदी में रियासत मजहबी असबियत की बुनियाद पर नहीं चलाई जा सकती, मुनाफरत की बुनियाद पर नहीं चलाई जा सकती. कौमी तशख़्ख़ुस, नेशनल आइडेंटिटी
وہ کسی اور سے نفرت کی بنیاد پر نہیں اس کو قائم کیا جا سکتا، اور اپنے ہی لوگوں کو غدار اور کافر قرار دے کر کام نہیں چلایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جو لوگ اللہ تعالیٰ میں یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پروگریسو لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ دو چار ہوں گے جو مطلب اس سے بھی ماورا ہوں گے، اور ہمیں کوئی وہ نہیں، ان کا معاملہ ہے وہاں نپٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے خود نپٹیں نا، میرا کہاں سے کام ہو گیا؟ یہ جو ہم نے ایک بنا لیا ہے کہ ہر آدمی دوسرے پر اسلام نافذ کرنے پہ تلا بیٹھا، اپنے کردار کے اوپر، اپنے عمل کے اوپر، اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرو، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، اور مرے کعبے میں تو بت خانے میں گاڑو برہمن کو۔ تو یہ ایک اپروچ ہمیں بدلنی ہے پوری قوم کی، مشکل کام ہے۔ اگلی بار کے لیے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب میں ہر سال آپ سے ریکمنڈیشن مانگتا ہوں، 2 دفعہ مانگی ہیں، ای میل بھیجتے ہیں تقی صاحب اور میں بھیجتے ہیں، اگلی بار جب ریکمنڈیشن کریں تو جو بھی آپ کی عمر ہے اس سے 15 سے 20 سال چھوٹے کچھ لوگوں کے نام بھی بیچ میں ڈالیں۔ یعنی اگر ایک آدمی 60 سال کا ہے تو وہ 3 ریکمنڈیشن بھیجے تو وہ تو ان میں سے 2 تو چلو اس کے ہم عمر ہوں، لیکن کم از کم ایک جو ہے وہ چھوٹا بھی ہونا چاہیے، تاکہ اس کو ہم تھوڑا سا ایک ینگر سیٹ بنائیں۔ چلتے چلتے ایک اسٹیٹسٹک آپ سب کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان کی میڈین ایج اس وقت 23 سال ہے، یعنی پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کا نصف لوگ جو ہیں وہ 22-23 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد کو نہ اسکول جانے کی سہولت حاصل ہے، نہ مدرسہ جاتے ہیں، چلو مدرسے ہی چلے گئے ہو تو مدرسہ بھی نہیں جاتے، کچھ بھی نہیں ان کو ملتا۔ تو اس پوری آبادی کو بھی اس نئے پروسیس میں ہمیں شامل کرنا ہے۔ اب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی ریسیپشن شروع ہے، اور کلو واشربو، سب خوش رہیں، اور اگلے سال انشاءاللہ ملاقات کے لیے سب تیار رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔